Okay students, so let's start with your practice set 17.1. The first question is given, in a circle with center P, ये सर्कल में पॉइंट आपको दिया है P which is center of the circle and chord AB is given which is 13 centimeter. तो ये पूरा जो AB रहेगा that will be a 13 centimeter. One more very important point which is segment PQ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है chord AB को. This is sign of perpendicular. Okay, so what we have to find? We have to find QB. Okay, so let's start. Segment AB is equal to 13 centimeter, which is given. Okay, then segment PQ perpendicular to chord AB. So just because of this perpendicular segment, point Q is a midpoint. Point Q is midpoint of chord AB. Okay. Now what we have to find? We have to find QB. So if you remember property of the chord, the perpendicular drawn from center of circle to its chord bisects the chord. That means ये जो perpendicular ड्रॉ किया है ये chord AB को bisect कर रहा है. That means AB के दो equal part कर रहे हैं, AQ and QB. And out of that we have to find QB. So what we'll write? Segment QB is half of AB. So segment QB is equal to half of AB. How much given? 13. Segment QB is 6.5 centimeter. Okay. Now let's start with your second sum. Okay, so students, let's start with your second sum. Now this second sum is a combination of properties of the chord and Pythagoras theorem. So to know more about Pythagoras theorem, I have already uploaded video, you can refer to that. Okay, so now let's start with this sum. Okay, in this sum they have given radius of circle with center O is 25 centimeter. Okay, so this will be my radius. OP cannot be radius. OP radius नहीं हो सकता है. Okay, OD is your radius which is 25 centimeter given. Find the distance of a chord. Okay, from the center. What we have to find? Distance of chord to center. ये जो OP दिया है ना, that we have to find out. Don't get confused. आपको chord नहीं पूछा है. What they ask you? Find the distance of a chord from the center. Chord से लेके center तक का दूरी. Okay, if the length of chord is 48 centimeter. So the whole chord which is CD is given 48 centimeter, OD is given 25 centimeter, and we have to find OP. Distance we have to find. So now what we'll do? We'll first find this part PD. Okay, so with the help of that PD and OD, we'll use Pythagoras theorem and we'll able to easily find out OP. Let's start. Okay, so answer: segment OD is equal to 25 centimeter. Okay, next segment CD. CD is how much? 48 centimeter. These things are given. Next point is given OP. Segment OP is perpendicular to chord CD. Okay, now do you remember property of the chord? Just because of this perpendicular,
आपका जो कॉर्ड है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा एंड यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है. सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल we'll able to use Pythagoras theorem. Okay, so segment OP is perpendicular to CD. After this, our next line is midpoint. Point P is midpoint of chord CD. Okay, now we'll use the property of the chord. So let's write the perpendicular drawn from center of circle to its chord bisect the chord. That means आप जो perpendicular draw कर रहे हो वो आपके chord को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, 2 पार्ट कर रहे हैं. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस पार्ट. लेट्स फाइंड PD. व्हाई नॉट CD? व्हाई नॉट CP? CP की हमें ज़रूरत ही नहीं है. वी हैव टू फाइंड बेसिकली OP. अब OP निकालने के लिए हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम के लिए एटलीस्ट 2 साइड्स तो होना चाहिए. हियर आई हैव हाइपोटेनियस, मेरे पास में OP तो मुझे फाइंड करना है, बट PD आई कैन ईजिली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड. कॉर्ड मेरा पूरा CD दिया है 48. सो लेट्स फाइंड सेगमेंट PD. PD इज हाफ ऑफ CD. मतलब ये जो हिस्सा होगा मेरा PD वो हाफ है CD का. ओके, सेगमेंट PD is half of CD. CD how much I have? 48. Okay, segment PD is equal to half of 48 is how much? 24. So I have PD 24 centimeter. Okay, so here I got PD. But हमारे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? Find the distance of a chord from the center. तो कॉर्ड से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड OP. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट विल गो इन अ ट्रायंगल. इन ट्रायंगल OPD एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल P हमारा 90 डिग्री है. एंगल P मिलने के बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? will show hypotenuse. So segment OD is hypotenuse. Okay, so according to Pythagoras theorem, okay, the next part I'll write here. According to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus height square. Base square plus height square. Hypotenuse do I have? Yes, ये जो हमारा hypotenuse है वो है हमारे पास में. So I'll write length OD square. Okay, is equal to base how much? Base PD square plus height OP square. Length OD square, so I have 25. 25 square is equal to PD how much? PD is 24. Okay, so 24 square plus OP square. So how much square of 25? 25 का square आएगा 625. And how much square of 24? It's 576 plus OP square. Now how do we find out square? आपको 25 इंटू 25 करना है, you will get 625. आपको 24 का स्क्वायर करने के लिए 24 इंटू 24 करना है.
you will get 576. Now what do we do? ये 576 को हम OP स्क्वायर में प्लस नहीं कर सकते, सो हम उसे इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में लेके जाएंगे. 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर. अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 9 and 8, 9, 10, 11, 12. You'll get 49. 49 is equal to OP square. Okay. Now taking a square root of both the side. देखो 49 is also square of some number and OP square is square of some number. So taking square root of both sides. Okay. Square root of 49 is equal to OP. So 49 का square root क्या आएगा? 7. 7 is equal to OP. So the distance of chord from the center is 7 centimeter. So we'll write the distance from chord. Distance from the chord. Okay, so we'll write distance of the chord from center is 7 centimeter. Okay. Okay students, so let's start with your third sum. In this third sum they have given O is a center of a circle. Okay, so this O is a center of a circle. Find the length of radius. So we have to find out radius. They didn't ask about chord, they didn't ask about this distance, they have asked you radius. Okay, what more information they are given? If the chord of a length is 24 centimeter, तो आपको chord दिया है, chord AB is given, is at a distance of 9 centimeter. आपको center और chord के बीच का distance भी दिया है. What they have asked you? Radius. Students, in standard 9th you will get same questions but they'll not give you this diagram, so you have to draw it. फिर ऐसे टाइम में कन्फ्यूजन होता है, मेरा रेडियस मुझे कहाँ पे लेना है. आप कॉर्ड बना लोगे, आप ये डिस्टेंस भी बना लोगे, फिर रेडियस में ड्रॉ कहाँ पे करूँ. सो मेक श्योर वो आपका कॉर्ड का कोई भी एक पॉइंट से लेके आपके सेंटर तक आपको रेडियस ड्रॉ करना है. डोंट फॉरगेट, आपको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने के बारे में सोचना है. ओके, सो आप ये जो रेडियस है ना, आप तो कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो. जब आस्क यू रेडियस, राइट, सो कीप इन योर माइंड, आप कॉर्ड की कोई भी एक साइड से लेके सेंटर तक वो रेडियस ड्रॉ कर लो. सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो इन दिस सम दे हैव आस्क यू द रेडियस, दैट मीन्स दे हैव आस्क यू OA. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन. सो विल राइट segment OP. OP is 9 centimeter. Okay, segment AB is how much? 24 centimeter. Okay, now the next information is given, which is segment OP is perpendicular to chord AB, and when it perpendicular comes, आपके chord को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा एंड राइट एंगल ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. ओके, सो हियर आई विल राइट पॉइंट P is mid point of chord AB. Okay, now we'll use the property of the chord. What we'll write? The perpendicular drawn from center of circle to its chord bisect the chord. दैट मीन्स आपका जो ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है OP, ये आपके कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सेगमेंट AP इज हाफ ऑफ chord
AB. AB. Segment AP is half of 24. So I have called AB 24. So segment AP is equal to half of 24. How much? 12 centimeter. Okay. So now I have this part. AP हमारे पास में है. I have OP. So now with the help of Pythagoras theorem, I'll find out OA. Now segment AP is 12 centimeter. So we'll use Pythagoras theorem to find out OA. Okay. So we'll write in triangle OPA. OPA, angle P is equal to 90 degree. Okay. So once I have angle 90 degree angle P, so I'll show hypotenuse. Segment OA is hypotenuse. Okay. Now I'll use Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus height square. Let's write side. hypotenuse क्या दी आपके पास में है? AO square is equal to base square. Base is AP square plus height is OP square. OA I have to find out. AO या फिर OA, आप कुछ भी बोल सकते हैं. Okay. OA square is equal to AP is how much given? AP I have AP is 12 square plus OP is 9 square. AO square is equal to 12 square. That means 12 into 12 is 144. 9 square is 9 9s are 81. AO square is equal to 144 plus 81. 5, 12 and 1 2. Okay. So AO square I have 225. Okay. Now this both are the squares. AO जो है ये square है and 225 also square. So we'll write taking square root of both sides. Okay. AO is equal to root of 225. So AO is equal to how much? 15 centimeter. So I have this AO which is 15 centimeter. Okay, so students, as of now हमने जो basics of the circle, properties of the chord with practice set 17.1 ऑलमोस्ट कवर कर लिया है. 17.1 का जो रिमेनिंग पार्ट है विथ प्रैक्टिस सेट 17.2 हम कवर करेंगे हमारे अगले वीडियो में. दोस्तों, विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़ के साथ में बने रहिए. प्लीज़ हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसे रेफ़र कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए.